minus W is equal to outlet है H4 plus V4 square by 2 এটা kinetic energy and this is potential energy. So total is your summation of all energy known as total energy. That means total energy at a point 3 is equal to total energy at point 4 G Z4. Here similarly Z3 is equal to Z4 cancels, G तो समान तो ये तार कैंसिल हो गला both side and V3 also V4. So ये भी किसी तमर velocity बढ़ू नहीं, इटा नजल नहीं किसी नहीं, velocity also remain constant. So इटा भी कटिगल both side. एटी जेहेतु इटा isentropic process by reversible adiabatic process, there is no heat transfer. It is adiabatic wall. Total turbine is insulated, so no heat exchange between surroundings and system. So that means Q also 0, heat transfer is also 0. So what will happen? As it is reduced to S3 minus W is equal to H4. तेणु यहाँ कौन हम ये W एम सेपरेट नहीं गले S3 minus H4 is equal to W. That means turbine work is equal to S3 minus H4. Now इटा पाई गले आउ दरकार pump derivation is different from this. You can also get pump is here. Suppose this is the pump. So this is the pump. Here water is coming from the condensate pump, condenser, and this pump raises pressure to boiler pressure. So this is condenser to boiler pressure, and the states as per diagram is 1, 2. This is 1 and this is 2. Now we apply the same steady state equation for this pump. This is your pump. Akonti condensate pump, pump. Now apply here, say H1 plus V1 square by 2 plus GZ1 plus Q minus W is equal to H2 plus V2 square by 2 plus GZ2. Here same V1 is equal to V2, so these both side they are cancelled, and elevation also same, GZ1 same. Also no heat transfer here, pump रे किसी heat transfer नहीं, इटा 0, खाली W आउची, माने it is having W. H1 minus W is equal to H2, or H1 minus H2 is equal to W, pump. H1 minus H2, it is negative. No, so pump work is always negative. So this is WP. WP. This is pump work. You know, pump work is always negative because it is supplied work, not work produced. So it is negative. So it is negative means your S2 is equal to
This is negative. This work is negative. That means Wp is equal to minus H1 plus S2. So S2 is equal to how much? S2 is equal to Wp plus H1. So this is the enthalpy at outlet of the pump. Remember, S2 is equal to Wp plus H1. Then another way of derivation of pump is from second law of thermodynamics. Here, estimation of pump work. From the combined first and second law of thermodynamics, we know this formula TdS. In thermodynamics, you find this equation. In thermodynamics, you will find this equation. Combination of first law and second law of thermodynamics. TdS means Q is equal to dH minus VdP. So for pump, you know, change in entropy is 0 because it is a reversible adiabatic process. So that means constant entropy process. So that means change in entropy is 0. So here change in entropy ds is 0, and so it will reduce to, if it is 0, 0 is equal to dH minus VdP. So dH is how much? dH is equal to VdP, change in enthalpy. So you know pump work is VdP, or as per definition, pump work is equal to press multiplication of volume into pressure. There is a change in pressure, so this is dP, change in pressure. Change in pressure means boiler pressure is shown, it is boiler pressure minus shown condenser pressure, PB minus PB. If the boiler pressure is not very high, because boiler pressure যদি বেশি না হবো তাহলে you can neglect pump work. So you will get Wp is 0. If boiler pressure যদি ଅଧିକା না ହେଲା তাহলে you can neglect the pump work. The heat, that means work supplied to the pump is negligible if boiler pressure is not so high. So therefore the Rankine efficiency reduced to this form. So this is the simplified form, S3 minus S4 divided by S3 minus S2, neglecting pump work. Okay. Next we will solve some numericals on this Rankine cycle. This is numerical 1, say numerical 1. Say it is your problem 1. In this numerical, very simple numerical, dry saturated steam at 150 bar enters a steam turbine and comes out at 1 bar. Calculate the cycle efficiency. So first you read again, dry saturated steam. The steam condition is dry saturated at 150 bar enters a steam turbine and comes out at 1 bar. Calculate the cycle efficiency. That means steam turbine means, so it is generally understood that this is the Rankine cycle. So for the Rankine cycle, you draw the temperature entropy diagram. So as per this diagram, here it is shown, this is the
dry saturated steam, and here the pressure is, this pressure is 150 bar, and the condense comes out माने कोड बाहरी गला ना 8.4 रे बाहला पसिला 3 रे बाहला 4 रे, so this is 1 bar. That means boiler pressure is 150 bar and condenser pressure is 1 bar. So P2 is given in the formula, P2 is 150 bar, P1 is 1 bar. S3 is given, it is saturated, that means this is your saturated point. This point is in the saturation line. जो टू आम स्टार्ट करवा लाइन टा माने दिस इज 3 is in saturation G line, and saturated vapor line. This is the G line, this is F line. So in the G, that means SG, HG जहाँ H से प्रेशर देइछि इंटरेस्टिंग, एंड तार आम एटा को आम स्टीम टेबल, बाय द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल एटा विल गेट फ्रॉम द स्टीम टेबल लिखा है, फ्रॉम स्टीम टेबल you will get the corresponding enthalpy at 150 bar and 1 bar. So it is given from the steam table, it is S3 is equal to this much, 2610 kilojoule per kg. आउ आम एंट्रोपी भी दरकार आसीबो, सेटा भी एंट्रोपी एका बेले बाहर कर देछि एई जगह एंट्रोपी SG, S3 SG ja, this is also equal to S3, this is also equal to S3 is equal to this much, 5.310 kilojoule per kg per Kelvin. आमको बाहर करे पड़छि रैंकाइन एफिशिएंसी टू फाइंड, एटा डाटा गिवन लिखिलो, तापर लिखियो टू फाइंड फ्रॉम द TS डायग्राम. आम जानी जे कांस्टेंट एंट्रोपी होची के ना टर्बाइन रो एक्सपेंशन. दिस प्रोसेस इज योर एक्सपेंशन प्रोसेस. दिस इज कांस्टेंट एंट्रोपी बिकॉज इट इज ए वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन कौन दीटा समान हम ऑर्डिनेट, S3 is equal to S4. So this is constant entropy process. From this logic you will get dryness fraction at 4. कहीं आमर टर्बाइन वर्कटा हूँ कौन, टर्बाइन वर्क आम जो कैलकुलेट करवा तार फर्मूला है कौन S3 माइनस H4. आमको S3 टा जना अच्छी एटा दे देछि गिवन, किंतु H4 देने. H4 भी आम स्टीम टेबल पाइबानी, कारण इट इज इन द वेट रीजन, माने मिक्सचर रीजन, नॉट सैचुरेटेड रीजन. So therefore dryness fraction is a must for knowing H4. ये लिखा है H4 is equal to HF plus X HFG माने X4G. तामाने तमरो H4 टा किंत पाइबा ना HF कोटी ना एई जगह एटा हला HF, एटा हला F लाइन कहि छी, एटा हला HF. एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड H1 at 1 bar. ये सब 1 bar एटा 1 bar रो प्रॉपर्टी गुडा स्टीम टेबल बाहर करिवो at 1 bar. 1 bar HF केते HF1, तार माने HF1 सेटा प्लस X4 ड्राइनेस फ्रैक्शन at 0.4 जहाँ थिबो into HFG latent heat, or you can write HG. HG माने कोटा एटा AG टा एटा HG माइनस एटा HF, एटा HF ए HG HF एगुड़ा सब तुम पाइप स्टीम टेबल, एटा पाई परिवो, एटा भी पाई परिवो. तेणु से स्टीम टेबल सेटा से कैलकुलेट करछि. HF केते आछि ना एतिकी 417.5 किलोजूल पर केजी. एटा सब स्टीम टेबल बाहर कलेक्ट करछि. तापर प्लस X4 टा तो आम पर कैलकुलेट जानिले, तापर एठु आगे X4 टा पाइबा, एटा हला X4. S4 इज इक्वल SF, S3 इज इक्वल S4 माने एटा हला S4 रो फार्मूला, काना S4 टा अछि बर्तने
को रिजन रे ना एटा वेट रिजन रे अछि एटा हम S4 टा आमे पाई परिबा नै टेबुल ताको ए जो इक्वेशन पाइबा S4 is equal to SF plus X4 SFG S4 is equal to SF हमर सेम स्टीम टेबल पाई जीवो वैल्यू at 1 bar एटा at 1 bar at 1 bar रे प्रॉपर्टी रू एटा पाई जीवो स्टीम टेबल SF पाई गला X4 टा अननोन अछि एटा अननोन अछि X4 into एटा मल्टी ए चिन्हटार गुणन SFG ର भैल्यू एटा से स्टीम टेबल पाई तमे भी पाई परियो तमे भी निजे ट्राई करी पाइबो तेणु स्टीम टेबलटा इज ए मस्ट परीक्षा हो तमे निजे स्टीम टेबलटा यू शुड हैव ऑलवेज एटा को सॉल्व करो S4 हला एतिकी अच्छा एटा को हम बर्तन इक्वेट कर दवा S3 सहित कहना कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस S3 जे केते देइची ना 5 S3 ता वैल्यू हम पाइचे 5.310 किलो जूल पर केजी केल्विन हैला ताले S3 राइट हैंड साइड एटा वैल्यूटा तुमको गिवन लेफ्ट हैंड रे अछि इक्वेशन एतिकी बर्तन ए दीटा को सॉल्व कर देलो x हैला गोटे अननोन आ सब नोन हैला x वैल्यूटा भी तुम एटी लिखि परिबो X4 is equal to 5.310 minus this 1.303 divided by this 6.057 एटा तुमको दबो X4 is equal to 0.66 ये गोटे स्टेप छाड़ी देछि एटा इक्वल राइट तो X4 पाइला परे आमे बर्तमान से 4 पॉइंट रो एंथैल्पी भी पाई परिबा H4 is equal to HF plus SFG एई HF टा हम कहली जे 1 बार रे 8 पाइबो टेबल से स्टीम टेबल पाइबो माने हमर सैचुरेटेड प्रॉपर्टी तमे जानिछो तमे आगु सेमिस्टर करिछो एडा सब ऑलरेडी यू नो HF किन पांती सेटा पाइलो X भी आमे कैलकुलेट कर बाहर कले HFG भी तमे बाहर करियो स्टीम टेबल ता गुणी देले H4 पाई गलो ना तमरा टरबाइन वर्कटा पाई जीवो देखिए नेक्स्ट स्लाइड रे हाँ टरबाइन वर्क आसी गला S3 minus H4 एटा हम कैलकुलेट करले 4 टा पाइले एटा आगुर देइथिला 2610 एटा बतन टरबाइन वर्कटा पाई गले सॉरी बर्तन आम टरबाइन वर्कटा पाई गले एटा तारे पंप वर्क पंप जानछ VDP into 1000 एटा आम पाई जिबा एटा कि फॉर्मूलाटा पाइले ए जो फॉर्मूलाटा हम कहि दोछि हमर WP हला कोन दिस WP is equal to VDP हमर इक्वेशन VDP V हला स्पेसिंग वॉल्यूम हला बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर इज इक्वल टू V दा लिक्विड एटा V दा वॉल्यूम लिक्विड वॉल्यूम VF बॉयलर प्रेशर मन कर जति कि बार रे थिबो एटा बार साधारण दोच बार तेटू एटा को बार को केजी पर मीटर स्क्वायर करिवो हला PB माइनस PK एटा हो 10 to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ वॉल्यूम अछि मीटर क्यूब पर केजी तेणु एटा कोन हैला हाँ तापर किलो जूल जदि करिवो आधे 1000 हरिबो किलो जूल डायरेक्ट किलो जूल हबो तेणु से जगह एटा हे कि एटा पड़ी आछि VDP into 100 किलो जूल पर केजी आगे जूल पाइथिला एतिक आम जूल पाइथिले तादेर जदि ये कर देले 1000 हरिदेले किलो जूल पाइगल एटा 10 to 3 ये 10 to 5 थिला तेणु कटिकी रहिला
10/2 रहा तेनाली पाइले दिस इज द जनरल फर्मुला फॉर डब्ल्यूपी जे VDP इंटू 100 किलोजूल पर केजी ये VPटा भी तुम से पाइज कौटू आमर स्टीम टेबुल एटा VP पाइगल एटा पाइगल ये 100 गुणदेल एटा आमर देइछि प्रेशर बॉयलर 150 बार एटा 1 बार तेणु एटा बर्तमान WP भी पाइगल ये आम नेग्लेक्ट कलनी WP जेहेतु प्रेशर इज भेरी हाई तेणु एटा WP आम नेग्लेक्ट कले तापर मुझे H2 केमती पाइब ये फर्मुला आम डिराइव कर H2 इज इक्वाल टू H1 प्लस VDP से फर्मुला बर्तमान H2 भी आम दरकार था भी पाइगले यहाँ आम H1 टा देइछि H1 दिस इज H1 एटा सिस्टम टेबुल पाइल है H1 टा से HF H1 माने HF यहाँ भी तुम सातुरेशन टेबुल पाइल यहाँ PV भल डायग्राम तार V स्पेसिफिक भल VDP तो आम पाइचे कैलकुलेट कर देचे यहाँ पुट करदे तेणु आम H2 भी पाइगले तेणु हिट सप्लाइड आम जानते H3 माइनस H2 बर्तमान हिट सप्लाइड क्यू बॉयलर आम डिराइव करते H3 माइनस H2 बर्तमान से भैल्यूटा आम पाइगले यहाँ H3 इज 2610 यहाँ पाइगले दुईटा तेणु ये हिट इनपुट पाइगले तेणु एफिशिएंसी है नेटवर्क बाय हिट सप्लाइड नेटवर्क है ये WT माइनस WP WT ये जानते WP जानले तेणु दुईटा माइनस करदे नेटवर्क पाइगला डिवाइडेड बाय हिट इनपुट सो दिस इज द एफिशिएंसी 31.6% परसेंट केमती है ना जब आम गोटे ये 100 शो करनी 100 मल्टीप्लाई करा पड़ो 100 मल्टीप्लाई कले तुम परसेंटेज पाइब दैट इज 31.6% इज द एफिशिएंसी ऑफ द Rankine cycle where turbine pressure is 150 bar, inlet outlet is 1 bar. So by the help of steam table without any molecular diagram steam table we will get the answer. Okay, now we will discuss some modified Rankine cycles. Your syllabus is given some modification of cycle